We always hear that invest your money, save your money, make a budget of your own money, and also grow your money. But do you think that we are financially literate to manage our whole money? I don't think so. And especially for you medicos, I think we people have been into that science background since 11th class, and we do not study anything related to accounts or tax or like anything related to finance. And that is why when we enter MBBS or when we start earning in our post graduation, when we get a stipend, so we have no idea कि यार tax भी भरना है, ITR भी भरना है. मतलब even if I talk about my own story, I came to the college, I started earning, and then I got to know कि मुझे कुछ ITR भी भरना था. What is ITR? I have no idea. और बाकी सारी चीज़ें भी I had no idea कि saving करनी होती है, ये करना होता, कुछ नहीं पता था. And this is what is called as that we people are actually financial illiterate. Be it you can actually call it as a flaw of education system or whatever. But yes, we people do not have that literacy which is very much required in our practical day-to-day life. So today is one such podcast where we are inviting our guest, our expert, who would be telling you how to invest money, what you should do to actually be financial literate, and how you can be a doctorpreneur, which is doctor plus entrepreneur. So today we are inviting Dr Nachiket Bhatia, who is CEO of DBMCI, that is Dr Bhatia Medical Coaching Institute, a very prestigious institute for coaching for NEET PG entrance exam. He has been featured in very well known magazines and articles, one of them being 40 Under 40, then in Forbes for 10 most influential CEOs, and also in a lot other magazines. So now let's begin with our podcast. Hello sir, welcome back to our channel. It's a pleasure to have you, sir, and learn some good things from you. Hey guys, thank you for having me. Huge fan of your channel. Thank you Thank you so sir. much, sir. So today's topic is something very different. We won't be talking about studies, we won't be talking about MBBS, but we would be talking about something which is so important in today's life, which MBBS students are lacking, and which I think the best expert would be you, who would be giving your opinion, your advice in teaching all of us, and that is financial literacy. Thank you so much guys for actually first of all taking out this topic, because I believe that big influencers such like you, if they put a shine on this topic, many more medicals will be interested in this, because it is still a back burner domain for us. We are still showed us that the only way forward for a medical is NEET PG or specialty, but I believe that entrepreneurship is always an open door for any medico, and the intellect they have, I mean, I've seen medicos, super brilliant medicos, if they enter this field, they will blast everyone off. That's what I mean. Undoubtedly. And I believe because of this lack of financial knowledge we people have, so whenever we feel that we have to start something, and I know a lot of apps also people have started, medical people have started, but with the help of an engineer or an MBA, like someone who knows more about financial things. And even I feel that we both have also thought of starting few things, and we couldn't do it because of this break, that because we didn't know कि कैसे मतलब आगे बढ़ना है, how to start with a startup, how to become It might be an self-doubt type का आ जाता है, which I mean stops most of the people. Yes. So I think the first question which we would love to ask you is about your own journey, that how from a medical student from MBBS from a private medical college, now you are one of the big shots, one of the businessman which I think all of us look up to, and you are being featured everywhere, be it Forbes, be it Times, everywhere. Yeah, matlab
आई हैव दैट वन सॉब स्टोरी. अब मैं दोबारा सुनाऊंगा तो लोग मुझे मारेंगे कि साले फिर वही सुनाने आ जाता है. No, so that story is actually an inspiration for many, including us. मुझे मैं सुना तभी पाऊंगा जब तुम मुझे प्रॉमिस करोगे तुम मुझे गालियों से बचाओगे. तब मैं बता पाऊंगा उसको. Maybe no problem. We'll take that on us. So मतलब आई वुड रियली वांट कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे ऑडियंस है उनको ये चीज मतलब बहुत ज्यादा सुननी चाहिए, बिकॉज दिस इज वन इंस्पिरेशनल स्टोरी. वी लुक फॉर इंस्पिरेशन आउटसाइड, बट you are the one who's actually an inspiration to so many people, and this story is not well known to many people. So मतलब if you tell, I'm sure बहुत लोग अब from MBBS would love to be an entrepreneur as well. Okay, so basically I was in my I'm from 2011 batch, so I was in my MBBS. The reason I got into my business was that I was in my MBBS second year, alright, and this guy, there used to be an institute called PGDIMS. So उस time पे 2013 था. So that guy came over and all my friends मेरे आसपास इकट्ठे हो गए कि अभी मजे लेगा इसके, because I came from a coaching institute. तो बंदा आया, मैंने उससे सवाल पूछने शुरू करे. तो मैंने पूछा अच्छा बताओ डैम्स कैसा है, उसने कहा बहुत बढ़िया है. अच्छा बताओ ये कैसा है, उसने कहा बहुत बढ़िया है. तो मैंने पूछा अच्छा बताओ भाटिया कैसा है, तो ही टोल्ड मी कि भाटिया बंद होने वाला है. तो एकदम तो मुझे लगा कि दैट मे बी ही नोज कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, सो ही माइट हैव टोल्ड. क्योंकि उस टाइम पे इट वाज जस्ट लाइक अ कपल ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन द मार्केट एंड एवरीबडी न्यू कि मैं डॉक्टर भाटिया का बेटा हूँ. बट आई कुड कंसिडर दैट ही वो जूनियर आदमी है, इसको नहीं पता होगा. तो मैंने सोचा अच्छा क्यों, कह रहा कि सारी फैकल्टी छोड़ चुकी है, बच्चे अब जाते नहीं है, बहुत खराब हो गया ये वो. एंड सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि दैट ही इज एक्चुअली टॉकिंग, ये दिमाग वाली बात कर रहा है. सो वहां तो मैं आई जस्ट लाफ्ड, बट द नेक्स्ट डे आई फिगर्ड आउट कि एक बार ना जाके पता करता हूँ कि गेम क्या है. एंड व्हेन आई फिगर्ड आउट कि व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज दैट हाफ ऑफ द थिंग्स दैट ही वाज टॉकिंग वाज ट्रू. Some was exaggerated, but of course, but at that point we were in the decline phase. So in my third year when I joined my business, tried to understand what is happening. And those also I was a silent spectator. मतलब मैं बैठा होता था टेबल पे, बट कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा होता था. ओके कि आधी चीजें फाइनेंस की होती थी, आधी चीज मार्केटिंग की है, सेल्स की है. अभी सब होता क्या है, आई मीन व्हाट इज स्ट्रैटेजी, व्हाट इज 3 month प्लानिंग, व्हाट इज 6 month प्लानिंग. अब ना मेडिकल में कभी बात होती थी उस चीज की, और जब पहली बार शायद चेक भी भरना था, इतना कंफ्यूज था इसमें करना क्या होता है. ओके ओवर द टाइम आई रियलाइज की दैट इफ आई रियली वांट टू टेक दिस थिंग फॉरवर्ड, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा कभी प्लान नहीं था इसको कुछ बड़ा करने का. मेरा हमेशा प्लान था ये बच जाए. ठीक है, ये मेरा प्लान था कि बच जाए. उस टाइम सर्वाइवल वॉज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी देन ग्रोथ. And when things started to go down, it was pretty bad at one point of time. But then I realized कि ठीक है, if I really want to invest myself in, then I have to get up from my chair and start learning stuff. Otherwise I was just मैं फंसा हुआ था डेली उसके अंदर. 2 जगह से गाली बच्चे से, 2 जगह गाली पार्टनर से, 2 गाली फ्रेंचाइजी से, और 8-10 गाली खा के घर. ये मेरा डेली शेड्यूल था. Because negative review, that was all I could ever get. And I think that is one part which has made me a lot stronger, because I believe that every person in this world should see failure once, should get abuses from the client once, because that will make you what is the correct word, whatever doesn't fail you makes you stronger. That made me stronger कि मुझे realize हुआ कि जितनी भी गाली पड़ रही है ना, उसके बीच में अगली बार जाना है, वहीं जाके बात करनी है. I think that is the first वे टू एंटरप्रेन्योरशिप, कि अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा तो एक दिन करना पड़ेगा कि कोई चीज से तुम्हें डर न लगे. फिर 18 में आई इन्वेस्टेड अ लॉट इन माई सेल्फ. आई लर्न सो मेनी स्टफ इधर उधर करके, बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं आता था. टीम्स क्या होती है, और मेडिकल का DIA डॉट था ना, पूरी कोचिंग में कहीं यूज नहीं होता था. वो सिर्फ एक पढ़ाने के लिए, वो तो फैकल्टी सर, हमारी फैकल्टी बहुत बढ़िया थे, वो फैकल्टी पढ़ाई देते थे. तो मेरा DIA डॉट का वहाँ कोई यूज ही नहीं आ रहा था. सिर्फ मुझे समझ में आया कि मुझे DIA डॉट को भूलना पड़ेगा 10 मिनट के लिए, और बाकी जो 100 चीजें वो सीखनी पड़ेंगी. सो 18-19 आई इन्वेस्टेड a lot in myself, learned a hell lot of degrees, skills, I'm sorry. And then 20 में जब गुरुकुल लॉन्च हुआ, और 19 का फेलियर तो मेरा गुरुकुल का इतना बड़ा था ही.
90 में आई लॉन्च्ड गुरुकुल फर्स्ट एंड उस टाइम पे कहते हैं कि नवा एंटरप्रेन्योर था मैंने लॉन्च कर दी कि ऐप आ जाएगी, मजा आ जाएगा. ऐप फ्लॉप्ड सो बैडली आई कांट इवन टेल यू. और वो मेरी लाइफ का इतना बड़ा धक्का था कि पहली चीज करी और इतना बड़ा वो फेलियर आया. तब मैंने अपने आप में और इन चीजें इन्वेस्ट की, समझा, कोडिंग सीखी थोड़ी सी समझने के लिए कि होता क्या है. ऑलराइट. और स्ट्रेस तो था ही, पैसे बिल्कुल खत्म हो रखे थे, घर था आखिरी, उसको मॉर्टगेज करा. I still remember my chacha, calling me stupid idiot because I was, going ahead and putting my house on mortgage. I had sold off all my dad's cars, whatever he had, I sold them off. मुझे था कि नहीं अब तो जो करूँगा खुद ही करेंगे. तो सो फाइनली मॉर्टगेज रखा घर और पैसा उठाया बैंक से. और उस टाइम पे था कि अगर ये नहीं हुआ ना तो फिर सड़क ही है सीधा, तो जेल है तो सड़क है या माल्या बन के बाहर जाना पड़ेगा. ये 3 चीजें थी ऑप्शन मेरे पास. सो देन आई रियलाइज कि ठीक है, व्हेन थिंग्स आर ऑन द लाइन somehow every person becomes an entrepreneur. So I don't call myself special or anything. I believe that जब भूखमरी की फाइट आती है तो यार हर बंदा ही कुछ ना कुछ कर ही लेता है. मैंने भी वही चीज करी और भगवान ने फिर ये बिल्कुल दिया. एंड टुडे by God's grace things are going good. So I believe भगवान देख रहा होता है तुझसे. Yes. I think whenever you work hard, the results are always positive. The only thing is that you have to believe in yourself whenever you're doing something. Consistent, right? And I'm sure this story, it's sounding so simple, but the person that is you who has actually faced it, it's so motivating and inspiring because many people actually fall down also in the same journey, but rising above is something incredible. True. It's like हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. ठीक है. So मतलब this journey is undoubtedly very inspirational. But today, when I was talking to a lot of friends, there was few of the questions which were very important, and I feel that you would be the best one to answer. One of them is that students, when they're doing their MBBS, so they don't get anything except for their pocket money from parents. Yeah, from parents, which I think probably isn't that sufficient also. So what should they do along with that to maybe like earn more and also like not even deviate themselves from their MBBS studies? I think I will not suggest anyone to think about earning more. I will first ask the students to invest on themselves to have the skills to earn more. Do understand, आज भी मैं इतने लोगों को जानता हूँ, इतने मेडिकोज मेरे पास आते हैं फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के लिए कि भाई पैसा है इन्वेस्ट करवा दे. किसी को भी ये नहीं जानना कि पैसा बढ़ कैसे रहा है. ओके, वो सो एक सामने वाले के भरोसे किसी को पैसा दे जाते हैं. मैंने भी शुरुआत में ऐसा किया है और वो पैसा फिर उसके हाथ में है. बढ़ गया तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो ठीक है. एंड में सबसे सेफ्टी क्या है, बैंक को दे दिया. कर तुम सेम ही रहे, तो एक इंसान को दे दिया, बैंक को दे दिया, बैंक ने आपको पैसा वापस कमा के दे दिया. I always tell students कि first you need to invest in yourself. कि how is money being generated? You should have that end idea. Our end idea in India is very bad. Our end idea in India is, you will see so many old people, in their 60s, boasting that I am still working. I am sorry, this should not be the end idea. At the age of 60 or above, you should be resting. Your money should be working. You should know how to generate money from more money from your current money. What's the point of working? कब घूमोगे दुनिया, कब जियोगे जिंदगी? 9 से 7 में दुनिया मर जाती है. Alright, so this is the thing that you need to know. And second, you need to understand everything that is happening around which can make you earn money. It's not just stocks. Even if a new young guy says stocks, he watches a couple of these videos from that सैफ अली खान मूवी और बाजार जो पिक्चर आई थी कि बाजार चालू छे, या फिर राकेश झुंझुनवाला की 4-5 मोटिवेशनल वीडियो देख ली कि इसने 5 से शुरू किया था, आज 50,000 करोड़ कर लिया. भाई बहुत बड़ी जर्नी थी. ठीक है ना. वो अपना पैसा लगाते हैं, वो अब स्टॉक्स या किसी की जरोधा की ले ली और उसमें लगाना शुरू कर दिया. दैट्स द मोस्ट स्टूपिड डिसीजन आई कैन डू. अगर आपके पास 500 रुपए, सबसे पहले कोर्सेरा पे जाओ, स्टॉक एक्सचेंज को समझने के लिए कोर्सेज आते हैं, वो करो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार अपने 500 रुपए मैंने बिल्कुल ठीक जगह करे. और अगले 5,000 रुपए को 50,000 कैसे बनाना है, पहले वो रास्ता सीखो. और जब तक खुद ना समझ में आए, कभी किसी और को अपना पैसा मत दो.
सो पहली जो चीज होनी चाहिए इन योर मेडिकल MBBS ड्यूरेशन शुड बी इन्वेस्ट इन योर स्किल बिल्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टॉक एक्सचेंज, बिटकॉइन ऑल्सो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, कोडिंग सबको आनी चाहिए. माई बिगेस्ट सिगरेट है कि मुझे अभी तक ढंग से कोडिंग नहीं आती है. मैं सीख रहा हूँ बट ठीक है, चलो डिफिकल्ट, मुझे ढंग से नहीं आती है बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न. बट अगर आप MBBS के दौरान कर सकते हो, इससे बेटर कुछ भी नहीं होगा. एंड बाय टाइम यू कम आउट ऑफ द MBBS, बताता हूँ दैट यू विल बी हैविंग वन डिग्री will never make you, let you die hungry, but that Mercedes, that Audi, that anything that big you think, those skills are going to get you that. Those skills are going to get you that. Your degree can just make you earn bread and butter, but Mercedes, my friend, comes from your skills. Undoubtedly, and I believe that your degree would just give you bread and butter only when you're working hard continuously. Your skills would be something which you will just do once and then you will get so much out of it. The proportionality is way too different in all of these things. Just one problem in the education system is like even पूरे एजुकेशन जब तक हमने अपनी क्लासेस की है, we were not taught anything about finances, we don't know about taxes, we don't know anything. जो एक फॉरेन कल्चर से डिफरेंस मेजर आ जाता है, दे नो एवरीथिंग. उनको छोटा छोटा जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें दे आर टॉट इन द चाइल्डहुड इटसेल्फ. बट हम लोग बस रट्टा में निकल जाती है पूरी. एंड देन नीट के बाद UG PG एंड अभी भी पढ़ ही रहे हैं MCH के लिए. ऑल स्टेज पे हम लोग सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, वो भी रियल लाइफ के बारे में भी हार्डली नो एनीथिंग. टू बी ऑनेस्ट, अभी हम लोग जब PG पे एंटर किए, वी डिड नो कि हमें कैसे अपना टैक्स भरना है, अपनी हमें स्टाइपेंड को भी कैसे यूज करना है. लाइक अभी भी सही से नहीं आता है. So what sources would you say कि हम कहाँ से डिजिटल मार्केटिंग एंड ये फाइनेंशियल लिटरेसी कहाँ से लाए? मतलब what you have told शिवांग, that's perfectly true. इसमें कुछ चीजें और ऐड करूंगा कि that एक 25 साल का जब MBBS का लड़का बाहर निकलता है ना, the first thing that he is suffering from is FOMO. All his engineering people have taken a job somewhere after completing BTech. They are earning money and that MBBS guy is still asking money from his home. The first mistake that he does, and that is because of peer pressure, is उसको जल्दी पैसा कमाना होता है. उसको जल्दी पैसा कमाना, क्योंकि गलती नहीं होती यार. आप कहीं बाहर जा रहे हो, तुम अपने पिताजी से पैसा मांग रहे हो, बीटेक वाले दोस्त अपनी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, एंड दे आर प्राउडली बोस्टिंग कि दैट आई एम अर्निंग दिस मच मनी, व्हाट आर यू डूइंग. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, 25 साल का लड़की को समझ में नहीं आता दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, पैसा आएगा कहाँ से. हमारी तो बिगेस्ट प्रॉब्लम ही यही है कि दैट फोमो एंड दैट वी स्टार्ट आवर like journey of life at a very late stage, 28, 29, okay. and तब तक ना दुनिया, जो बीटेक वाले होते हैं वो पोजीशन ले चुके होते हैं, उनके सैलरी आ रही होती है, so they are living a different lifestyle. और तुम्हें लगता है तुम बच्चे ही यार. हाँ, exactly, very relatable. So that tax problem I have suffered it. I can tell you so many times कि लोग कहते थे, लोग आके तुमसे ऐसे बात करते हैं considering your age factor कि तुम आज 28 के हो, तुम्हें पता होगा. कौन सिखा रहा है मैं? Nobody cares. All right. So I believe that first thing, if you really want, without investing anything, that is YouTube. आप YouTube खोलो, YouTube में बहुत कुछ है. ठीक है ना, आप YouTube में बहुत कुछ है. आप पढ़ने वाले बनो. अगर आप सीखना चाहते हो, आपको 1000 बंदे हैं जो सिखा देंगे. मतलब कि लोगों को to tell about finances, everyone, I mean, you go to your चाचा, मामा, पापा, सब बता देंगे कि बेटा पैसा ऐसे इन्वेस्ट कर ले. But if you really want to learn something, you need to go to YouTube. You need to get those free videos. You will find tons of stuff there. Otherwise, you want a little bit of organized things, go to Coursera, Udemy, Coursera. They have like 500, 700 rupee courses. But what happens is people don't think that they will be good enough. They never invest in that. They will directly go to Bitcoin. ठीक है, क्रिप्टो ले लिया, FD तो चलो ठीक रहती है, बट समझो क्या है चीजों को एंड देन इन्वेस्ट. यू विल गेट अ लॉट मोर रिटर्न. यस, दैट्स ट्रू. अभी मेरे साथ तो बिल्कुल ही रिसेंट ही हुआ है कि मैं मतलब कंसल्टेंट आज की ITR भरती है. मैं मुझे नहीं पता, मेरे पेरेंट्स भरते हैं, कोई आइडिया ही नहीं है हम लोगों को कोई चीज के बारे में. इट्स नॉट फॉर योर फॉल्ट यार. यू कंप्लीटेड योर नीट UG MBBS एंड डायरेक्टली जंप्ड इनटू PG. तो सीखने का टाइम कहाँ मिला है? और तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत है, इफ यू डोंट लर्न राइट नाउ, द मोमेंट यू कम आउटसाइड द कॉलेज एंड व्हेन यू गो टू अ कॉर्पोरेट जॉब, दे थिंक दैट इन अ सिंगल डे एन MD विल similarly turn into an salaried employee. You will know all the things to do it in your salary. तो जो हमें जो नॉर्मली लोगों को बफर मिलता है ना एक्सपीरियंस बनाने के लिए, हमारे पास वो नहीं है. एंड पीपल हैव लाफ्ड ऑन माई फेस दैट तुझे ये भी नहीं आता. आगे सुनो, नहीं आता यार, क्या करें.
Also, sir, a few of the students, मतलब PG वाले स्पेशली, were wanting to know कि कैसे एक स्टार्टअप को स्टार्ट किया जाता है, लाइक हाउ टू बिगिन विद इट. यू हैव एन आइडिया बट उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, स्टार्ट कैसे किया जाए. आई थिंक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए ये मैंने एक अभी पहली वीडियो में भी बोला है, पुरानी वीडियो के अंदर, आपके पास ना एक मास्टर स्किल होनी चाहिए. उस मास्टर स्किल के अराउंड स्टार्टअप बनता है. और डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए कोई डाउट नहीं है, बट एक मास्टर स्किल होती है जो स्टार्टअप को आगे बढ़ाती है. लेट मी टेल यू अबाउट डॉक्टर भाटिया. डॉक्टर भाटिया ने स्टार्टअप ही बनाया था 1996 में. बट यू नो, पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर भाटिया हैड वन मास्टर स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. क्योंकि वो चीज आपको नहीं मिलेगी, कंटेंट सबके पास मिल जाएगा आपको, बट टू एक्चुअली गेट द स्टूडेंट इंटरेस्टेड, दैट इज अ स्किल. आई सी यू गाइस, मतलब तुम सोचो ना, आज इतने सारे मेडिकोस MBBS चैनल बना रहे हैं. व्हाई डू स्टूडेंट्स फ्लॉक ऑन योर चैनल? बिकॉज ऑफ योर वन मास्टर स्किल. यू टॉक विद योर हार्ट एंड इट्स कॉल्ड, एंड इट इज बेसिक पब्लिक स्पीकिंग. You connect with the student. That is what startup is made of. Apart from that, as entrepreneur, as a startup owner, needs to know everything that is happening around. I'll tell you an interesting case. अभी मैंने LinkedIn पे भी डाला था सेम. So एक नया स्टार्टअप है, हेल्थ टेक के अंदर था. So that owner came to meet me, young guy, 27, and I told him that. So what is one growth hack? And I asked him, go down there. I'm giving you this stack of pamphlets. Go and distribute this to the people standing around the canteen. He said no. And I told him, this is the growth hack that you need. You need to be proud. You need to be able to do every work that is happening in your company. चाहे वो झाड़ू मारना हो, चाहे पर्चे लगाने हो, चाहे बॉस बनना हो. If you want to be an entrepreneur, you have to do everything. अगर एक भी चीज नहीं करी ना, तुम कंपनी से बाहर हो, कभी नहीं चलेगा. Exactly, so I think we can also completely relate to this thing. True, सही बात है. ये तो होता ही है सर. कितनी बार ऐसा होता है, मतलब नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब, इवन अपने उधर भी इन अ प्रोफेशनल ऑल्सो, डॉक्टर में भी जैसे जो चीज़ थोड़ी बहुत सिस्टर लोगों की होती है, अभी जो भी बॉल बॉय की होती है, दीज पीपल एट टाइम्स आर लाइक यार हम नहीं कर रहे, हम मतलब फ्लूइड नहीं बदलेंगे. सो वी पीपल वी डू इट, वी हैव टू डू इट, बिकॉज if you are not doing everything, तो you are not like a complete doctor. मतलब जो responsibility एक patient के लिए डॉक्टर के ऊपर है, वो सिस्टर के ऊपर कभी भी नहीं हो सकती. And same thing we have faced it for YouTube also. Like initially we had to learn everything, right from editing to poster making to pamphlet making to digital marketing, each and everything. Initially we had to learn everything. उसमें काफी time हमने invest किया. Now that we have reached a stage जहाँ पे we can tell others, but even to tell others to do the job, you need to do it yourself. Yeah. मतलब वो तो फंडा उल्लू ही बना देंगे हर टाइम में, कुछ भी. That's what I am saying है कि you are a perfect example of a successful startup. I mean, you need to do everything, because जहाँ भी क्वालिटी कम हुई, जहाँ भी आपने हाथ नहीं लगाया, वहाँ क्वालिटी कम हुई, आप उसको ठीक नहीं कर पाए, प्रोडक्ट फेल हो गया ना, आप मार्केट से बाहर. Right. So sir, the next question is कि though you have like already told कि मतलब अपने पे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए in learning skills, but still जैसे कि on an average PG students get 50,000 to 80,000 as their stipend all over India. So what are the ways they can invest or save their money? I think the number one should be, I mean, it depends how aggressive you are actually. If you are the safe kind of player, go with an FD. FD never goes wrong. ठीक है, but FD का हाल बहुत बुरा आज के दिन पे, so कोई पॉइंट नहीं आता उसके अंदर. Second would be to go with bank policies. Bonds आते हैं, policies आती है, you can invest there. They're giving pretty good return. And third would be they can try for something like crypto. They can try for something like stocks. All right, but उसके लिए either you have a very trusted person, which I would not recommend much, and other would be to learn about stocks before investing it in yourself. आज के दिन पे investing in stock has become very much easier. I mean, किसी की भी ऐप डाउनलोड कर लो, you can do that. But don't get into investment like बहुत ही short term के लिए. Short term में investment कभी भी आपको return नहीं देगी. तुम्हें लगेगा तुम रातों रात लाखोपति, वो लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, तो वो सिर्फ लक्ष्मी चिट फंड में हो सकता है, हेरा फेरी के अंदर, असल दुनिया में नहीं हो पाएगा. So that's what I recommend always. And
learn about financial literacy as soon as possible. MBBS फर्स्ट ईयर हो, MD थर्ड ईयर हो, ठीक है. जितनी जल्दी समझ जाओगे मार्केट में, जब जेन्युइन में काम करने उतरोगे, सो बहुत पैसा खोने से बचा सकते हो. अदरवाइज आई हैव टू लॉस सो मच मनी जस्ट बिकॉज पता नहीं था, खरीद लिया, किसी ने कहा था, उसके चक्कर में खरीद लिया, बाद में पता चला ना पैसा बचा ना कुछ रिटर्न मिला. सो सेव योर सेल्फ फ्रॉम बिकमिंग फूल्ड एक्चुअली. अच्छा सर, लाइक फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में भी लोग जैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, व्हाट डू यू एक्चुअली प्रेफर? इधर इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है और कि मतलब डाला तो लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, इंट्राडे तो इज वेरी वेरी डेंजरस. प्लीज डू नॉट गो इनटू. पीपल विल गिव यू इंसेन अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन दैट. It is very flaky. It is just like आज सुबह पैसा डाला, शाम को पैसा निकाल लिया, वो वाला गेम होता है. And it's very very risky, like very risky. If you are into stocks, पूरा दिन उसी में लगे रहोगे. मजा आता है because it's like gambling. It's pure gambling. So उस पर एड्रेनलिन रश जो आपका होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा. बट इफ यू आर जेन्युइनली इनटू इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, मतलब इट्स अ 5 year गेम. आप पैसा लगा के भूल जाओ, और मतलब भूलना मतलब होता है कि निकालना नहीं है आपको बाहर. यू हैव टू कीप अ कंट्रोल ऑन दैट, बट यू हैव टू मेक श्योर सभी मार्केट डाउन है तो सबकी मार्केट डाउन है. यू हैव टू वेट. इट्स अ पेशेंस गेम. ये वाला है. And sir, you are someone, I mean, who knows so much about finances and all. So I had even heard that you have launched a course on digital marketing especially. So I mean, even we had gone through it and we had seen, I mean, it's so good for especially the young minds, because right now so many medicos are I mean, making their own YouTube channel, Instagram blogs and all. So I mean, what are the facilities and services that will be offering that course? Actually, we are in the process of building that course, and we are trying to get, medico entrepreneurs to get interested in that. So it is going to solve every basic problem that a medico is facing in the financial world right now. Like GST कैसे भरते हैं, ITR कैसे भरते हैं, चेक कैसे डाला जाता है, हाउ टू ओपन अकाउंट्स, FD कैसे खुलती है, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, बिल्कुल और बेसिक्स कराएंगे, ताकि क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ ना, आई जस्ट वॉन्ट दैट नोबडी शुड कम आउट एज फाइनेंशियली इलिटरेट एज मी. तो जो मुझे लगता है कि जरूरी है, वी आर बिल्डिंग दैट. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन अ स्टूडेंट गोज टू दैट कोर्स, ही और शी विल एक्चुअली बी एबल टू सॉल्व द बेसिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ डेली बेसिस. सो उस कोर्स के बाद तुम्हें ये दिक्कत नहीं आएगी कभी भी. We needing it too, sir. No doubt. Very financially literate right now. This is such a noble idea, something which I think everyone would want. कि financial course कुछ हो for doctors, and also you people have that digital marketing course for doctors, something again which is very much required in today's era. And no one else is offering that. And nothing can be possible if today you are not digitally equipped, because everything is working on online. I mean, gone are those days जब paper में ad निकालना बहुत जरूरी होता था, तभी आपको कुछ चलता था. Nowadays digital marketing is, I mean, so hot. Yes. आज के दिन पे तो every doctor needs to learn marketing, not just because that he wants to become an entrepreneur, but because of survival. It's a survival skill right now. Even if you you open a clinic and you don't know how to market that clinic, please see around yourself. You have tons of competition. तो तुम्हें डिग्री तुम्हारे पास पेशेंट लेके नहीं आएगी. तुम पेशेंट को बचा लोगे डिग्री की वजह से, बट पेशेंट को वहां तक लाना और मेक श्योर कि रिकरेंट आता रहे, that's what skills is about. So the day I'll tell you something. I have given an application to the Indian government also to actually add skill building in our MBBS and also BDS graduates. It should be a part which I strongly believe it is. कब तक हम लोग अपने बच्चों को सिर्फ हम बात बाहर वालों को कहते देखो ये इन्फ्लुएंसर है, ये वो है, ये 25 साल में लड़का आज बिलियनियर बन गया. हमें रास्ता तो दिखाओ. एटलीस्ट द गवर्नमेंट शोज अस सम वे ना. हमें नीट पीजी तक कैसे पहुंचना हम सबको पता है कि 4 साल का ये रास्ता होता है. बिलियनियर कैसे बनना उसका रास्ता तो दिखाओ. फिर लेट द पीपल स्टार्ट देयर जर्नी एंड वील सी हु रीचेस द टॉप. बट इट्स हाई टाइम द गवर्नमेंट मेक्स अ वे फॉर एंटरप्रेन्योर्स. Right. Right now, so there are around 105 unicorn companies in India, and out of those, just one company was started by a doctor in collaboration with engineers. So, what are the tips you would like to give for young entrepreneurs? To become a unicorn itself, I think it's a big thing. First of all, sir, do let me know what is unicorn,
do let us, the audience should know about what is a unicorn company. So a unicorn is a company which has $1 billion valuation. Okay. Which is roughly equivalent to 8,000 8,000 crores. Valuation, not the revenue. All right, valuation. Yeah. So Pristine Care, I'm sure you're talking about Pristine Care right now. Yes, So sir, I have Pristine had the honor of listening to the owner, the founder in a tech startup forum, and to be very frank, he's superbly brilliant. Okay, a gentleman. I did not interact with him much, but मैं सुन रहा था सिर्फ. So brilliant ideas. The one thing that if you want to become a unicorn is that you need to find a problem in the domain and you need to make it as transparent as possible. Try to get two people connected by having complete transparency in the middle. That is what a startup is all about, always. I mean, you figure out any startup that you have, okay, like Pristine Care. Pristine Care ने क्या किया? Pristine Care ने डॉक्टर को सीधा पेशेंट से मिलवाया और डॉक्टर के कैरेक्टरिस्टिक को पेशेंट को दिखाया कि आपका इलाज ये डॉक्टर करेगा, सर्जरी ये डॉक्टर करेगा, इस तरीके से होगी, ऐसे होगी, ये आपका बिल बनेगा, सब कुछ पहले दिखाया. क्योंकि पहले क्या होता था, आप घुसते थे, आप रिसेप्शन पे पैसे रखते थे, वो कहते थे बेस्ट डॉक्टर देखेगा, जो भी डॉक्टर अवेलेबल होता था वो आता था. ओके, वो कौन है, क्या एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं बताया जाता था. एंड में आके जो बिल बन रहा होता था आपको देना होता था. देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी. प्रिस्टीन केयर ने वो चीज करी. एंड यू सी एनी सक्सेसफुल स्टार्टअप इन एनी डोमेन, इट हैज जस्ट शोन अस. जोमैटो ले लो, जोमैटो ने क्या करा? जोमैटो ने आपको बताया कि भैया ये पैसा है, ये सामान है, अगर खराब होता है तो मैं गारंटी लेता हूं बीच में. एंड उस ट्रस्ट में लोगों ने जोमैटो से खाना मंगवाया. दैट इज व्हाट अ स्टार्टअप इज ऑल अबाउट. ठीक है ना? ये भी मैंने बहुत स्टडी करके मुझे पता चला कि दैट यस, गेनिंग ट्रस्ट एंड बिकमिंग ट्रांसपेरेंट. सो इफ यू कैन डू दीज टू थिंग्स, यू कैन सॉल्व a simple common man's problem. My friend, you have a unicorn startup in front of you. तीन चीजें बस. That's very well said, sir. That is true in today's era. I feel more than having a very innovative and a unique idea, you also have to build that foundation of trust amongst the customer and your business. Then only people would come up to you, because we have a lot of competition. Even if I talk about skincare products or even if I talk about bigger companies, सबको अपने अपने competition की line मिली हुई है. But then there was a reason why now Mamaearth is what it is. It's a unicorn, or maybe physics wala is also the unicorn. So these people are unicorn in their own ways because they could gain that trust. आज फिजिक्स वाला ने क्या किया? फिजिक्स वाला ने जहाँ पे लोग कोर्स 1-1 लाख रुपए का बेचते थे, उसको 4-5 साल में किया. उसने कॉमन स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी. ही लॉन्च्ड द लो कॉस्ट थिंग एंड ही मेंटेन्ड द सेम क्वालिटी. थिंग फ्लरिश्ड. ऑलराइट, दिस इज हाउ एवरीथिंग इज बिल्ट. It is just the right idea, just the right thought, and the agenda, the intention should be not to earn money, but it should be to solve a common man's problem. If your intention is clear, I'm telling you, you will be able to build a unicorn. Nothing can stop you. And this whole conversation has given us a lot of knowledge, has enlightened us, and definitely has given us that zeal and motivation to learn things, invest on ourselves, build skills, and then definitely go into entrepreneurship. I think this whole year has been a wave of entrepreneurship. A lot of new companies have set up, a lot of unicorns have been there this year. So now medical shouldn't be behind. They should also learn, invest in themselves, and should know more about all of these things. Thank you so much, sir, for having this wonderful session with us, and we really feel great that you were here and you told everything which was asked by all of our audience. Thank you, Kanika. Thank you, Shivang. I believe it was a brilliant session. And if any of you needs any help, I am available on my Instagram is Dr Nachiket Bhatia. You can always connect with me there. And to be very frank, you go to YouTube, you'll find, and on Instagram you'll find much better guides and mentors for this thing. I am still on a learning phase, but whatever I have learned, I will be more than glad
to always share with you guys. So thank you so much and God bless you. Thank you so Thank much, you, sir. sir.